exposed. So I asked the text, well, what's the underlying concern? What's the purpose of this text? So this is the author speaking. In my view, the lack of mutual affection and accord, much emphasized by the Sharia and validated deeply by the intellect, its great cause is bad social etiquette. And then he says, since long the need was being felt for jotting down some important rules of ethics of sociability. So there is a need and there is a crisis. So he lays those out right in the beginning. अगर ये रिसाला बच्चों बल्कि बड़ों को भी पढ़ाया जाए तो इंशाल्लाह आगे आप you can fill in the blanks, right? So both for kids and for elders. Kids came first and elders second. Anyhow, then we move on to the text structure. Basically, in the introduction, he makes a basic case for this text, provides a context, and then he moves on to laying out, I think, 120 different adab. Adab number 1, adab number 2, adab number 3, adab number 4. So these are sort of short points, what we can call bullet points. Etiquette for meetings, etiquette for hospitality, and you can see this is the longest section of the text. Etiquette for letters and correspondence, so how to write a letter and how to correspond with one another. Then he has another very famous work which is also translated into English by Barbara Metcalfe. It's called Bahishti Zever. So he says here are some more from there. Special etiquette for elders, and then some concluding remarks. So that's the basic structure of the text. For now, just see, he lays out 3 different groups of people who interpret religion differently. They think this is what religion includes, and they seem to exclude something. So he says lay Muslims, scholars of outward, I just put it and then a question mark, outward word, say outward religion. And then mashayikh seems to be the Sufis. So these 3 groups, the text is arguing that these 3 groups do not include Adab-e-Muashrat, these ethics of sociability. They don't see it as part of religion. Of course, it's openly arguing against inappropriate bad social behavior. And third, is it arguing against any intellectual theological position? No. Not that the text is not discussing intellectual theological schools. It is simply discussing this problem of social behavior. Aqaid and ibadat. He says awam, lay Muslims, think that's religion. Then he says fuqaha, or the outward, scholars of outward, they include muamalat in there, which is transactions. Then he says, if you turn to then mashayikh, Sufis, they talk about spiritual virtues. But nobody talks about social virtues. Now I've changed the translation again. Social virtues, but it's the same thing. Ethics of sociability. So I forgot to change this part. So he says all 3 groups have completely forgotten about this. So there is a certain level of critique. He says if all of them are ignoring this, of course he'll have to make a case. How is ethics of sociability part of religion? He cites certain ahadith, verses of the Qur'an, and anecdotes from the seerah of the Prophet, and says, see, here we can see it. Here this is happening. So I'll give you one example. This is a verse of the Quran. He says, "ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में जगह फराख कर दो, तो जगह को फराख कर दिया करो, और जब तुमसे कहा जाए कि खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाया करो." और इरशाद है कि दूसरों के घर में बे इजाज़त दाखिल मत हो. And then, so this is the first citation coming from the Quran, and right after that then he says, देखिए इसमें अपने जलीसों साथ बैठने वालों की राहत की रियायत का किस तरह हुक्म फरमाया है. So he's driving a principle out of a particular verse. And then he goes on. There are other examples he gives, and he keeps driving some principles. All of them, then I try to capture them, and here they are. You can read them. Number 1, taking care of the comfort of others. Number 2, the Sharia doesn't approve that the attention of someone engaged in important matter be diverted. Avoid what others feel bad about. Now everything seems commonsensical. The interesting thing is, it's all common sense. But this was, by the way, it was written in 1912. This is 2016. Do not do anything that embarrasses someone, causes shame. This is my favorite. Speak clearly and precisely. Do not show your respect to someone in a manner that is averse to that person's temperament. Give priority to the wishes of others. We'll talk about the application of this text, which comes in the conclusion. As I said, this concludes the introduction. He has made the case that ethics of sociability are part of religion.
He lays out certain rules, and now he says that I'm going to write out some of the things that come to mind. There is no order. There is no particular sequence, hierarchy, prioritization happening. He says it himself. I'm not saying it. So he says, I'm now going to lay out whatever comes to my mind. These are things people can do. So I'll give you example. मुलाकात के आदाब, अदब नंबर 1, जब किसी के पास मिलने या कुछ कहने जाओ और उसको किसी शुगल की मसरूफियत की वजह से फुर्सत ना हो, मसलन कुरान की तिलावत कर रहा है या वजीफ़ा पढ़ रहा है या कसदन मकाम खलवत में बैठा है, कुछ लिख रहा है या सोने के लिए आमादा है, या अलामात से कोई ऐसी हालत मालूम हो जिससे गालबन इस शख्स की तरफ मुतवज्जो होने से उसका हर्ज होगा या उसको परेशानी होगी, ऐसे वक्त में उससे कलाम सलाम मत करो, बल्कि यहाँ तो चले जाओ। और अगर बहुत ही ज़रूरत की बात हो तो मुखातिब से पहले पूछ लो कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर इजाज़त के बाद कह दे, उससे तंगी नहीं होती। और या फुर्सत का इंतज़ार करो और जब उसको फ़ारग देखो तो मिल लो। बाज़ आदमी साफ बात नहीं कहते, तकल्लुफ़ के कनायात के इस्तेमाल को अदब समझते हैं। इससे बाज़ औक़ात मुखातिब नहीं समझता या गलत समझता है, जिससे आइंदा परेशानी होती है। बात बहुत वाज़ेह कहनी चाहिए। किसी ऐसे शख्स से कोई चीज़ मत मांगो कि कराइन से यकीन हो कि वो बावजूद गरानी के भी इनकार, यानी बोझ के बावजूद भी इनकार ना कर सकेगा। किसी से ऐसी चीज़ ना मांगी जाए कि उसको उसका बोझ हो तो वो इनकार ना कर सके, अगर ये मांगना बतौर कर्ज़ या रियायत ही के हो। अलबत्ता अगर ये यकीन हो कि उसको गरानी नहीं होगी या अगर गरानी हुई तो ये आज़ादी से उज़र कर देगा तो मुज़ाहिर। नंबर 10, बाज़ औक़ात बाज़ खिदमत दूसरे से लेना पसंद नहीं होता, सो ऐसी खिदमत पर इसरार ना करना चाहिए कि ख़ुद मखदूम को तकलीफ़ हो। अगर किसी के यहाँ मेहमान जाओ और तुमको खाना खाना मंजूर ना हो, ख्वाह तो इस वजह से कि खा चुके हो या रोज़ा हो या किसी वजह से खाने का इरादा ना हो, तो फ़ौरन जाते ही उनको इतला कर दो कि मैं इस वक्त खाना ना खाऊंगा। ऐसा ना हो कि वो इंतज़ाम करे और उसको मशक्क़त करनी। किसी के सामने कागजात रखे हों, उनको उठाकर मत देखो। शायद वो शख्स किसी कागज़ को तुमसे पोशीदा करना चाहता है, गो वो छुपा हुआ क्यों ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो उसको पसंद नहीं करता कि इस कागज़ का इस शख्स के पास होना तुमको मालूम हो। बाज़ आदमी थोड़ी बात पुकार कर कहते हैं और थोड़ी बात बिल्कुल आहिस्ता, कि बिल्कुल सुनाई ना दे, और दोनों सूरतों में मुमकिन है कि सामने को गलत फहमी या तरद्दुद और उलझन हो, और दोनों का नतीजा नागवार है। बात के हर जुज़ को बहुत साफ कहना चाहिए, बात को अच्छी तरह तवज्जो से सुनना चाहिए, और अगर कोई शुबा रहे तो मुतकल्लिम से फ़ौरन दोबारा तहकीक करना चाहिए। बेसमझे महज इज्तिहाद से अमल ना करे। बाज़ औक़ात गलत फहमी के साथ अमल करने से मुतकल्लिम को तजर्बे से मालूम हुआ कि काम करने वाले आदमी के पास बिला ज़रूरत बेकार आदमी का बैठना उसके कल्ब को मशगूल और मुशव्विश करता है, ख़ासकर जब उसके पास बैठ कर उसको तकता भी रहे। इसका बहुत लिहाज करना चाहिए। ख़त की इबारत और मजमून और ख़त बहुत साफ़ हो। हर ख़त में अपना पूरा पता लिखना ज़रूरी है। मकतूब अलैह के ज़िम्मे नहीं है कि उसको हिफ्ज़ या याद। सेक्शन विच आर एक्सर्प्ट्स फ्रॉम बहिश्ती ज़ेवर, दिस अदर टेक्स्ट तरह। अगर किसी से मिलने जाओ तो वहाँ इतना मत बैठो या उससे इतनी देर बातें मत करो कि वो तंग हो जाए या उसके किसी काम में। जिस शख्स की निस्बत तुमको कराइन से यकीन हो या गुमान हो कि तुम्हारे कहने को हरगिज़ ना टालेगा, तो उससे किसी ऐसी चीज़ की फरमाइश ना करो जो शरअन वाजिब। अगर बिला फरमाइश के तुम्हारी माली या बदनी खिदमत करे कोई भी, तब भी इसका ख्याल रखो कि इसकी राहत या मसलहत में खलल ना पड़े, यानी उसको ज़्यादा जागने मत दो, उसकी गुंजाइश से ज़्यादा उसका हदिया मत लो। अगर वो तुम्हारी दावत करे, बहुत से खाने मत पकाने दो, हमराही में बहुत से आदमियों की दावत मत करने दो। एंड देन कंक्लूडिंग रिमार्क्स। Key principle: the Sharia has placed special emphasis that no action or state of any person should cause even the minimum of pain, trouble, heavy-heartedness, discomfort, embarrassment, or sadness. That's the key principle he says people need to take away from this text. The summary of all these rules is this: never let any word, action, or state of yours to cause trouble, pain, or discomfort for another person. This is the essence of good etiquette or good ethics of sociability. Anyone who keeps this rule in mind, I think this is interesting, anyone who keeps this rule in mind will not need much further detail. And then he says, that's why I stop right here. I can go on to write another 1,000 more, but if you got the point, if you got this basic principle, this can be applied to different situations. However, a little more will need to be done with regard to this principle. This is now applicability of this principle. We have to ponder before uttering a word or doing an action whether it can cause pain to someone. In this manner, we'll err very little, and after some time, this will become part of our nature. Simply, this is how we create the habit of proper sociability. That's how it has to be done.
So it's a cultivation of habit that he suggests towards the end of the text as a way out. Because we cannot have 2,000 other adab rules with which we can, look it up in a dictionary. It's like, what's the adab here? But the basic principle, he says, if that's in someone's mind, that person practices it for long enough, it becomes second nature. It comes naturally. He says, I would like to conclude these rules by mentioning their limitations. Some of them are general and are applicable for everyone in all circumstances. On the other hand, some of them do not apply to the masters. Makhdoom, who have developed mutual frankness. So, mutual frankness is a condition that will say how these rules apply. If there is a frank context, application will be different. If there is lack of frankness between people, then probably general principles will apply. So that's another adjustment to the main rule that he suggests towards the end. Whether one has developed frankness of this level is a matter to be decided intuitively, so I leave the determination of rules also upon intuition. And then he ends with a verse. So I would like to end by mentioning a verse that synthesizes both types of rules, general and particular. The ways of love, all of them are nothing but good adab, good manners. So, O friends, teach yourselves these manners.